and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's take a look at some stories of this week's episode. People of illegally occupied Gilgit-Baltistan protest against government's inability to resolve their issues. Female students of Gilgit's Karakoram University hold demonstrations against poor bus services. Inter-district program organized in Anantnag to promote theatre activities among students. J&K administration giving push to health infrastructure across the territory. And later in a section of Incredible India, we'll take you to witness the celebrations of Bihu and Baisakhi in different parts of the country. The government of illegally occupied Gilgit-Baltistan that works in cahoots with Islamabad has repeatedly failed to fulfill the rightful demands of its people. As a result, they have to come on streets time and again to protest against the hostility of the administration. Recently, a demonstration was held in Gilgit to highlight various issues that the locals have been suffering for long, but the government has turned a blind eye. We have a report. There is anger and loathing among the people of illegally occupied Gilgit-Baltistan, as even after repeated pleas, government has failed to address their issues. Recently, a protest was organized by the Awami Action Committee to bring forth a number of problems, ranging from load shedding to subsidy cut on wheat that government has left unresolved. During the protest, locals even demanded sovereignty from the government of Pakistan. हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मलकियत का हक तस्लीम करें। दूसरे नंबर पर सब्सिडी के नाम पर हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तो नाकिस गंदम दिया जा रहा है और वो भी जो है बिल्कुल जो है उसके मुंह में ज़ेरे के मकदार काटते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें जो सब्सिडी हमारा हक है वो हक जो है मुकम्मल हमारे आवाम को मुहैया किया जाए। उसके साथ बिजली के मंसूबों के अंदर जो है अरबों रुपए की मशीनरी लाई गई, फिर भी बिजली मौजूद नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ के पानी से बिजली पैदा करके बड़े मंसूबे लगा के गिलगित बल्तिस्तान को लोड शेडिंग फ्री जोन करा दिया जाए। उसके साथ साथ आईनी हवाले से हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए और गिलगित बल्तिस्तान को जो है आवाम को जो है हक हुक्मरानी भी दी जाए और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को खुद मुख्तारी दे के अपने फैसले करने की जो है उनको इजाजत दी जाए। Fed up with the apathetic attitude of authorities, protesters have threatened to increase the intensity of the demonstration if no action is taken. आज का एहतजाज जो है अभी हमने सिर्फ एहतजाज इस्तेजाजी की, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है इंशाअल्लाह वो धरने तक जाएगा और पूरे गिलगित बल्तिस्तान को हम जाम करेंगे। The people of illegally occupied Gilgit-Baltistan have time and again raised the voice against the stepmotherly treatment that is meted out on them. They blame the incompetent and impassive rulers of the region are just concerned about filling their own coffers and serving their masters in Islamabad. And the Karakoram International University in Gilgit-Baltistan is once again in limelight. All thanks to its corrupt and indolent administration that is least bothered about the safety and security of its students. Recently, the female students of the university raised their voices against the poor bus services being provided by the institution. Take a look. Overcrowding goes unabated in buses of Gilgit-Baltistan's Karakoram International University. Students, especially female, have started demonstrating outside the university against the same. They say
Even after paying full fees for the transport service, they are forced to travel in the buses that are packed beyond capacity. The university administration has failed to take any action, despite the issue being highlighted several times, and even when it is concerned with the safety of students. हमें बस में जाते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब क्या ही बताएं, बस मिसाल के तौर पे आप पोल्ट्री फार्म की जो मुर्गियों की गाड़ी नहीं होती है, बस वही सीन है हमारे बस में भी। बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, कभी भी हमें सीट नहीं मिली है और इतना लोड होता है बस में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मशीनरी इतना लोड बियर कर सकती है, तो ये स्टूडेंट्स की जान के लिए खतरा भी बन सकता है। हमसे फ़ी ली जाती है लेकिन हमें सही तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जाता है। तो यूनिवर्सिटी वालों को चाहिए कि इस तरह का रिस्क ना लें। ये जो है कभी कोई खतरे का सामना भी करना पड़ेगा अगर इस तरह का लोड बस इसमें जारी रहा तो। Students are demanding the number of buses to be increased so that all of them can be accommodated properly. Many even want the classes to be held in shifts so that overcrowding in buses can be avoided. बसेस में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। बेसिकली फीमेल्स को हमें बैठने के लिए जगह तक नहीं मिलती है, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट ये है कि या तो ये शिफ्ट्स में इजाफा करें या बसेस का अरेंज करें, या जितना स्ट्रेंथ है बसेस के अंदर स्टूडेंट्स के लिए उतने ही स्टूडेंट्स को उसमें रखें। अभी 70 सीटर बस में 200 से ज़ायद स्टूडेंट्स को ये लोग लेकर आते हैं। It's not for the first time that the students of Karakoram International University have to come out on roads to protest against the administration's ignorant attitude. Earlier too, they have stood up against the university's arbitrary decision of not waiving their tuition fee and lack of faculty. They say even after charging hefty fees, the university has failed to resolve their issues. And next we move on to Jammu and Kashmir, where theatrical activities have once again started picking up pace. Even after undergoing a series of ups and downs in keeping up with the contemporary historical developments of the territory, theatre has finally managed to find its feet in the valley with the constant help of authorities and sincere efforts of the artist. Recently, an inter-district program was held in Anantnag to encourage theatre practices, especially among the younger generation. Have a look. Theatre is an integral part of Kashmir's culture and tradition, whose history can be traced long way back. Popularly known as Bhan Pather, this age-old folk theatre of the valley is a beautiful blend of song, dance, music and drama. It was once a powerful medium to educate and aware people about various social issues. Though it saw a steady decline with technological advancement, but with the efforts of dedicated artists and authorities, Bhan Pather is again getting a new lease of life. The recent initiative was taken by the Education Department in collaboration with Indian Army to give boost to theatre activities and other folk arts among the younger generation. An inter-district program was organized at the Shangas area of Anantnag, in which around 10 to 12 students from all zones of the district participated.
मुझे बहुत अच्छा लगा कि थिएटर्स फिर से हुए। पहले कश्मीर में हुआ करते थे, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ के लिए। तो मैंने आज पार्टिसिपेट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें पार्टिसिपेट करके। तो जो थिएटर्स है, मैं कहने यही चाहूँगी कि थिएटर्स फिर से होने चाहिए कश्मीर में। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का और इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इनने हमें मौका दिया, इससे हमें एक्सपोजर मिलता है। तो ये होने चाहिए फिर से थिएटर्स यहाँ पर कश्मीर में होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम कश्मीर या जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, यहाँ जो भी लोग हैं, तो वो फर्टाइल है। तो इस फर्टाइल माइंड को अगर हम कुछ एक्सपोज करेंगे या उनको कुछ मौके देंगे, तो उन मौकों की वजह से यही होना चाहिए कि हालांकि थिएटर होने चाहिए, तो फिर वो अपना मुस्तकबिल अच्छा बना सकते हैं। Besides theatre, students also showcase their talent in various activities like singing and dancing. By involving the young talent, an attempt is being made by the authorities to revive the centuries-old legacy of the Union Territory, along with connecting the young generation to its roots. इससे पहले हम ये थिएटर को हर जगह मना रहे हैं। थिएटर हमारे गांव में जैसे कि बांड पतन होता था, और जो और एक था और उसको हम रो बोलते थे, वो भी चलता था। लेकिन बहुत टाइम हुआ था जिसको हम ये अप नहीं करते थे। लेकिन आज की बदौलत, आज की वजह से एजुकेशन सेक्टर और इंडियन आर्मी ने इसको अप करने, प्रमोट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से हमने आज बच्चों को दावत दी है इस थिएटर को उजागर करने के लिए। और इससे क्या है, एक कला पैदा होता है, बच्चों में एक इंटरेक्शन होती है। जैसे कि हमारे शांगत से, अच्छा बल से, वेरी नाग से बच्चे आ रहे हैं, उसको उजागर करने की कोशिश की हमने। और हमने इसी की बदौलत इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आज यहाँ शुरू किया है इस थिएटर को उजागर करने के लिए। Jammu and Kashmir boasts of a rich theatrical history that also finds its mention in the 12th century literary texts Neela Mata Puran, Kalhana and Raj Tarangini. After witnessing a golden age of drama that lasted for 1500 years, the theatre culture of the state underwent a sharp decline. But with time, theatre activities improved in the territory, producing a number of talented artists who further made a foray into television and Bollywood industry. One among them is Srinagar-based Mir Sarwar, who rose from playing in theatres in Kashmir to local serials, and then he finally leapfrogged into Bollywood. He has worked with some of the top celebrities of Bollywood in box office hits like Bajrangi Bhaijaan, Phantom and Dishoom. Another eminent face is Jammu-based Juhi Singh, who is an actor, singer and guitarist. She began her career as a theatre artist and worked in numerous plays and regional films. She even acted as child artist in the Bollywood film Yahan, directed by Shujit Sarkar. Adil Pala from Srinagar is also a young artist who started from working as a teenage actor at a local theatre before entering into Bollywood. He got famous with his negative character in the web series Overcrowding, The Seas Within, which was premiered on Sony Live. Today, authorities in the Union Territory are also playing a great role in encouraging the artists by providing them with a platform to showcase their talent. Though the theatrical activities came to a standstill due to the virus outbreak, but now the artists are back with a lot more enthusiasm and alternative ways to amuse and aware the audience.
And Jammu and Kashmir administration is making consistent efforts to strengthen the health infrastructure in the territory. From introducing healthcare investment policy to setting up of prestigious medical institutions to collaborating with private players, J&K administration is pulling out all the stops to reduce the burden on government hospitals and transform the patient care in the Union Territory. Jammu and Kashmir is on a path to give fillip to its health sector. Several initiatives are being taken by the administration to ensure the accessible, affordable and quality health facilities for all. Lately, Lieutenant Governor Manoj Sinha inaugurated Dr. KD's multi-speciality hospital in Jammu that will boost the healthcare facilities for the district as well as for nearby districts. J&K administration has also signed a memorandum of understanding with the renowned healthcare company Apollo Hospitals that will soon be setting up its first 250-bed multi-speciality hospital in Jammu. Besides, there are many projects and MOUs in the pipeline to ensure best healthcare within the reach of every citizen of the Union Territory. देश का अकेला राज्य है जहां सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है। अब रोज का आंकड़ा अगर आप एनालाइज करें तो मोटे तौर पर 1.7 करोड़ रुपए पर दिन यहां के लोगों की चिकित्सा पर इस मद के तहत प्रशासन खर्च कर रहा है। लेकिन एक दिक्कत हमारी जरूर थी कि जो व्यवस्था थी वो सरकारी थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन गए, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स बन गए, ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी हमने बहुत बढ़ा ली, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अच्छे अस्पताल जम्मू में या श्रीनगर में या पूरे यूपी में नहीं। अब उसकी शुरुआत भी भारत के प्रधानमंत्री जी के कारण ही हुई है। अपोलो को जमीन हमने दे दिया है, 24 को प्रधानमंत्री जी आएंगे तो काम वो शुरू करने जा रहे हैं। कई देश नहीं, दुनिया के भी कुछ जाने माने अस्पताल श्रीनगर में उन्होंने आवेदन किया है। जम्मू में भी इस तरह के बड़े अस्पताल आ रहे हैं। The J&K healthcare investment policy that was approved by the government in 2019 has also shown a significant progress in terms of improvement in infrastructure, manpower and health system. Aimed at promoting private parties and entrepreneurs to set up healthcare infrastructure in the territory, the policy is one of the remarkable initiatives of the J&K administration. It provides 30% subsidy on capital investments for setting up of multi-speciality and super speciality hospitals, medical, nursing and paramedical colleges. Using the same, many have already established their private healthcare institutions in the territory. I was in government job. So when I came to know about this thing कि एक alternative setup create करने के लिए हमारे को government की तरफ से भी help मिलेगी, तो I thought why not try that also. तो उसके लिए then I conceived this idea कि एक multi speciality hospital बन जाए यहाँ, जो कि जम्मू में पहले सिर्फ नारायणा था एंड नारायणा वाज टू फार अवे, वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल था। सो एक ऑल्टरनेटिव सेटअप मैंने सोचा जिसके अंदर हमने इस अस्पताल को कंसीव किया एंड विद गॉड्स ग्रेस इस वक्त हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वी हैव एम्पल पार्किंग। हमारे पास कोई अराउंड 8 कनाल्स ऑफ लैंड इज देयर फॉर पार्किंग पर्पस। जो हमने बिल्डिंग बनाई वो एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाई सो दैट ऑल द स्पेशलिटीज कैन बी केटर्ड टू, and we have been to some extent successful in that. The J&K administration is not just concentrating on the creation of private hospitals in Jammu and Srinagar, but also on smaller ones in districts. It is even focusing on setting up health resorts to boost health and wellness tourism in the territory. Various interventions have also been introduced that will have a significant effect on healthcare delivery system. These include establishment of 2 AIIMS, 7 medical colleges,
2 state cancer institutes, 15 nursing colleges, 150 district, sub-district hospitals and thousands of health and wellness centers. Local residents are happy with the development that is taking place in the medical sector and the role which is being played by the private players in strengthening the healthcare ecosystem of the territory. गवर्नमेंट कोप अप नहीं कर सकता जब तक प्राइवेट इसमें इसका हाथ न हो. पूरा कंप्लीटली गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा कोप अप. जितनी मेडिकल फैसिलिटीज आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मिलती है या मेडिकल हॉस्पिटल में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. तो मुझे लगता है यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो हमें प्रेफर करते हैं. गवर्नमेंट में तो फैसिलिटीज़ हैं, बट लेकिन हम लोगों के पास टाइम, हम वर्किंग है, हम लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे हमको डॉक्टर्स अवेलेबल मिल जाए, हर अंडर वन रूफ हर कोई फैसिलिटी मिल जाए. चाहे वो सपोज पेशेंट है, अभी गायनी में दिखाना, उसको अल्ट्रासाउंड करना, अब हम अल्ट्रासाउंड के लिए कहीं और नहीं जाएंगे, हमको हर कोई फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है, तो प्रेफर करते हैं हम यहीं पर आए. अब देखिए पहले लोग क्या होता था, कुछ भी ऑर्थोपेडिक्स का केस होता, CMC चले जाओ, आप दिल्ली लेकर चले जाते थे, आउट ऑफ जम्मू लेकर जाते थे पेशेंट्स को. उसमें क्या हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, हम लोगों को रहने के लिए पहले वहाँ देखना पड़ता है कहाँ रहेंगे. बट मेरे को लगता है कि जैसे अंकुर में यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हमको यही मिल रही है, तो हमको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. In Jammu and Kashmir, special attention is being paid to 3 areas in the health sector, which include prevention, better treatment and care. Tireless efforts are being made by the administration to remove the imbalances and ensure availability of the complete gamut of healthcare services in the primary, secondary and tertiary care sectors to the locals in the Union Territory. Being an agrarian society, India celebrates a number of harvest festivals that form an integral part of the country's cultural legacy, and over the centuries, they have evolved in various forms. So today, in our section of Incredible India, we'll take you to immerse in the festivities of 2 such harvest festivals, namely Bihu and Baisakhi, that are observed with much vigor across different parts of the country. As the country marks the arrival of spring, people across different states gear up to celebrate their harvest festivals with joy and merriment. In Assam, it is observed as Bohag or Rangoli Bihu that marks the end of the harvesting season in the region. Celebrating the beginning of Assamese New Year that starts with the month of Bohag, the merriment of Bihu goes on for about 7 days. The first day of Bihu is known as Goru Bihu. It is dedicated to cattle and usually falls on the last day of the outgoing year. On this day, farmers take their cows to a pond or a river to give them a bath before applying a mahaldi made of turmeric powder and pulses onto them. इस बहाग महीना से नया साल हम लोग का चालू होता है और नया साल आज पहले हम लोग सुबह गोरू को हल्दी माह मतलब माटी माह से और हल्दी से नहा वहा के सुबह लोग को पूरा सम्मान दे के इसके बाद हम लोग उसको पठार में हम लोग ले जाता है, खेत में ले जाता है, खेत का पठार में ले जाता है. सब समूसा राज जितना हम लोग गाँव बसी है, गांव वाले सब इकट्ठा होके हम वहाँ गोरू को वहाँ नहाता है, गाँव धुलाई करता है और धुलाई उसको पूजा पाठ करके उसको छोड़ देता है. नया साल जैसे लोग का देह ठीक रहेगा, गाय हम लोग का गोरू ठीक रहेगा तो हम लोग का खेत ठीक रहेगा. इसी मतलब से हम लोग का ये परंपरा मान चल रहा है. Manu Bihu marks the second day of festival and the first day of New Year. People dressed in a new clothes seek the blessings of the elders and eat sweets to mark the celebration. The rest of the days of Bihu are also observed with great enthusiasm across Assam. A variety of cuisines are prepared.
Traditional feasts are organized and decked in traditional attire. Young men and women perform traditional Bihu dance. असम के जो बिहू है वो बिहू हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है और 2-3 साल तो हो गया है कोरोना के लिए बिहू नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें इस बार हमें परफॉर्मेंस करने के लिए मौका मिल रहा है, इसलिए हम जितना भी हो सके उतना ही हम छोटे-छोटे बच्चों को जितना हो सके वो बिहू के शिक्षा देने के लिए हम मेहनत कर रही हूँ। Baisakhi is another harvest festival that is mostly observed in the northern states of the country, especially Punjab and Haryana. An ancient festival of Hindus and a new year for Sikhs, the festival commemorates the formation of Khalsa Panth of warriors under Guru Gobind Singh in 1699. On this day, people get together and perform Bhangra and Gidda on traditional folk songs and dhols. ਅੱਜ ਤਿਉਹਾਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। For many Hindus, Baisakhi is an occasion to take a holy dip in sacred rivers like Ganges, Jhelum and Kaveri. At Haridwar's Har Ki Pauri Ghat, thousands of devotees gathered to take the early morning dip in Ganges water. Gurudwara across the country are also beautifully decorated on Baisakhi. At Golden Temple in Amritsar, one can also watch a splendid display of firecrackers that fill the night sky over the holy site. That's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team.